નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, now the continue our chapter, the chapter number 14, practical geometry, and the exercise 14.4. In this exercise, the first question is draw a line segment AB. So first of all, we have to draw a one line segment AB, but measurement is not given, so we have to take any measurements. So okay students, so first of all we have to draw a one line segment. Suppose 1 to 6. So this one is our line segments and give the name A and B. Right? A and B. Okay? Next, mark any point M on it. Now mark any point. So suppose this is the point M on it. Right? Through M draw perpendicular to AB. अब हमें एक perpendicular line draw करनी है. तो what do you mean by perpendicular? To perpendicular this means 90 degree. So we have to draw 90 degree lines. Then how? So use the compass. Now open your compass for any radius. So we have to open this step. Okay, open your compass for the any radius. Radius is not given, then open it. Then after M is center and draw a half circle. M is center, draw a half circle in this way. Okay. See dear students carefully how to draw the 90 degree angle. So first of all, open your compass. M is center, draw a half circle. Right? We have to take the same radius. Same radius. One times this one is draw an arc. And next times this one is our center. Draw an arc. Radius is same. Don't change the radius. जितनी radius ने आपने half circle draw किया उतनी radius से. One times here is the center. Draw an arc. Second times this one is center, draw an arc. Okay, same centers we have to take, and one by one this one is center, draw up arc, and next time this one is the center, draw up arc. So the two arcs are intersects to here. Now to joint, here is the intersect arc and is this point. Okay, so this one is the 90 degree angles. This means perpendicular to AB. Perpendicular to AB. Understands? So we have to intersect lines, give the name is D. Right? So this one is our first questions. Now write down the step. So the first step. So in the first steps, so we have to ड्रो. क्या किया था हमने? ड्रो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी. ड्रो एनी लाइन सेगमेंट ए बी. सेकेंड स्टेप, मार्क पॉइंट एम ऑन इट. सेकेंड स्टेप ने हमने क्या किया था? कोई एक एम पॉइंट है उस पर हमने मार्क आउट किया था. नेक्स्ट स्टेप, सो इन नेक्स्ट स्टेप सो हमने क्या किया था? ये हाफ सर्कल ड्रॉ किया था, लेकिन उसके लिए रेडियस कितनी थी? तो हम किसी भी तरह की रेडियस ले सकते हैं. उससे हम लोग बोलेंगे एनी कॉन्वीनियंट रेडियस. क्या बोलेंगे? एनी कॉन्वीनियंट रेडियस. राइट? सो राइट डाउन एनी कॉन्वीनियंट, CONVENIENT, any convenient radius, M as center, draw an arc. Any convenient radius, M as center, draw an arc. Intersect
एट एक्स एंड वाई। अब जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे हम नेम ले देंगे एक्स एंड वाई, इंटरसेक्ट एट एक्स एंड वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप, in next step with this x as a center, any convenient radius, draw an arc, right? Same, next time with x as center, any convenient radius और same radius, जिसमें हमें पहली भी रेडियस ली थी वही same radius, draw an arc, draw an arc. Okay, then after intersect at P. अब हम यहां पे जहां पे इंटरसेक्ट फर्स्ट टाइम हुआ था, अब हम यहां पे क्या देंगे P. नेक्स्ट स्टेप, विथ P is center, same radius, draw an arc, intersect at Q. अब P को मैं सेंटर लिया था और एक यहां पे आर्क ड्रॉ किए थे, और जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे हम एक और नाम दे देंगे, क्या, Q. ओके, अब उसके बाद क्या किया था, तो हमें सेम रेडियस ली थी, P और Q को सेंटर लिए थे, सो राइट डाउन सेम रेडियस P and Q as center, draw an arc, intersect at D. P और Q दोनों को सेंटर लिया और आर्क ड्रॉ की, जहां पे इंटरसेक्ट हुए वहां पे हमने नेम दे दिया क्या, D. अब द लास्ट स्टेप्स, सो लास्ट स्टेप जॉइन MD, जॉइन MD. तो अब होगा क्या, MD परपेंडिकुलर टू AB, MD perpendicular to AB. So this one is our first questions. Understand? Thank you for joining us.